Hello everyone. So in today's lecture we will be continuing with our discussion on vector algebra. Today we'll be doing all the examples from the miscellaneous from the chapter. So our first question is write all the unit vectors in xy plane. Okay. So write all the unit vectors in the xy plane. So like always, notes will be available below the video in the PDF format as a Google Drive link. So if we have to define all the vectors in the xy plane, तो पहले हम xy plane एक draw करते हैं, ठीक है? So uh, let's use the option to draw from here. Okay. Okay. So let's say this is our xy plane, and let's say any unit vector हम यहाँ पे अगर define करें, let's say this is the vector I'm trying to define, ठीक है? इसका length कितना है? 1 है. तो let's say this is my a vector, a cap, and magnitude of a cap is 1. एंड लेट्स से ये जो वेक्टर है कितना एंगल बना रहा है? थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो वी आर यूजिंग द सेम we are using the same convention as we use in trigonometry कि हम एंगल किससे लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो थीटा, तो ये जो वेक्टर है थीटा, इसमें थीटा कितना हो सकता है? थीटा बिलोंग्स टू, it can be 0 and it can be less than 2 pi, right? Okay, so I can say theta is between 0 and 2 pi, so that we have all the angles that this vector can make. So basically what I'm trying to say is this vector can be this vector or this vector or this vector or this vector. It can be any vector, right? But its length कितना है? 1. So that is the definition of the यूनिट वेक्टर की. इसका हम लेंथ 1 रखेंगे, ठीक है? सो लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो वो मुझे कैसे पता लगेगा? सो दिस लेंथ इज 1, राइट? ठीक है. सो दिस लेट्स सी, सो दिस इज ऑफ लेंथ 1 एंड दिस इज थीटा. सो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, so let's say this is my origin, this is my P, and this is my, let's say, P dash, just like the NCERT. So let's calculate OP dash and PP dash. So in triangle OPP dash, let's calculate OP dash. So OP dash divided by OP is nothing but, so this is base by hypotenuse with respect to angle theta. So this is cos theta. Same definition as your class 11 trigonometry. And we have OP dash by 1 is cos theta. So we find कि OP dash कितना है? This length is just nothing but cos theta, right? Okay. So and generally if you know, अगर ये लेंथ r होगा तो ये लेंथ कितना होगा? r cos theta, right? डिकम्पोजिशन आपने फिजिक्स में भी सीखा हुआ. सो दिस इज cos theta, this length is cos theta. Similarly in triangle OPP dash, let's find PP dash divided by OP, which is इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज sin theta.
एंड पी पी डैश हमें निकालना है, बट ओपी कितना है, वंस, राइट? सो पी पी डैश डिवाइडेड बाय 1 इज साइन थीटा, एंड पी पी डैश कितना आ रहा है, साइन थीटा. एंड वी नो फ्रॉम डिकम्पोजिशन कि ये वाला साइड वैसे आर साइन थीटा होता है अगर ये हाइपोटेन्यूज आर हो तो. सो दिस इज साइन थीटा. तो इसमें तो कुछ भी नहीं था. नाउ we can construct our vector OP. So I can construct my vector OP. मैं वेक्टर्स की डेफिनेशन से कर रहा हूँ इसको कि इन ट्राइंगल OP P डैश कि मैं OP डैश प्लस P डैश P वेक्टर अगर ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, OP वेक्टर. सो OP वेक्टर इज नथिंग बट OP डैश वेक्टर प्लस P डैश P वेक्टर, राइट? यू कैन check कि P dash and P dash cancel, so this is OP vector and triangle law. So from triangle law. But what is OP dash? So OP dash का लेंथ कितना है, cos theta, and इसका डायरेक्शन कितना है, I cap के along है ये, and PP dash कितना है, this is sin theta, and इसका डायरेक्शन कितना है, this is J cap के along, and this is the OP vector. So any vector, any unit vector in, so this is my let's say OP cap, and why I'm calling this OP cap, because this is a unit vector. This is a unit vector. Let me erase this and write it clearly. इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं. OP cap. So this is my general unit vector in the xy plane. So this is let's see from the NCERT. तो NCERT यहाँ क्या बोल रहा है? Okay, so let's prove that इसका length 1 है and overall we have defined the vector. Okay, so this is a general unit vector in xy plane, एंड जिसको हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, आर तो 1 है, राइट? सो बट हमने इसको थीटा के टर्म्स में डिफाइन किया है कि एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sin थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा विल बी नेगेटिव. बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, right? Because you're moving along negative x, but positive y, sin theta will be positive, and so on, so on. So it will work in all 4 quadrants, and we can check magnitude of OP cap should be 1, right? तो ये कितना आ रहा है, square root of x coordinate का square plus y coordinate का square, which is 1. So let's move to next question. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 4 वेक्टर्स एंड दीज आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी. सो मेरे को क्या गिवन है, ओ ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. तो इससे मुझे पता चल गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1 1 1. पोजीशन वेक्टर इज सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट? ठीक है. ओ बी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप plus 5 j cap, and there is nothing with the k cap, so 0 k cap. and इससे मुझे क्या पता चला कि coordinate of point B is 2, 5, 0. Similarly OC vector given है, this is 3 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap. So this implies coordinates of point C is 3, 2, minus 3, and OD vector, the position vector of point D is I cap minus 6 j cap minus k cap. So this implies the position vector of coordinate of point D is 1, minus 6, minus 1. So
नाउ ही इज सेइंग कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी वेक्टर। तो पहले हम ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर, so final point is B, initial point is A, so we are going from A B vector निकालना है and A is 1 1 1, right, and B is 2 5 0, so A B vector कितना होगा 2 minus 1 I cap plus 5 minus 1 J cap plus 0 minus 1 K cap, and this is 1 I cap plus 4 J cap and minus 1 K cap. Let's find CD vector now. CD vector is, so we are going from point C to D. You can look at these points here. The final point is D. So 1 minus 3 I cap plus minus 6 minus 2 J cap plus में minus 1 and minus 3 will become plus 3 K cap, and this is minus 2 I cap minus 8 J cap plus 2 K cap. Let's check it. हाँ ठीक है. So let's find the angle between these two vectors. But अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों वेक्टर्स को, तो मैं अभी के अभी क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ, राइट. इफ यू मल्टीप्लाई ए बी वेक्टर, अगर मैं ए बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं -2 से, राइट, ठीक है. सो आई एम स्केलिंग ए बी वेक्टर एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद -2, तो ये आई कैप के 1 आई कैप के बन जाएगा -2 आई कैप, 4 जे कैप के बन जाएगा -8 जे कैप, and -1 will become 2, right. So I have CD vector is some lambda times and negative number है यहाँ पे, some lambda times AB vector. So I have just so we can just say AB and CD are collinear, right. AB vector and CD vector are collinear. और मैं क्या बोल सकता हूँ, since we are multiplying with negative, right, since we are multiplying with negative, so they have opposite direction also, right, and they are anti-parallel, and they are anti-parallel. So इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, so angle between AB and CD vector will be pi. So angle between AB and CD vector will be equal to pi. So they are anti-parallel, right. So ये तो मैंने सिर्फ उन दोनों वेक्टर्स को नोटिस करके लिखा ये स्टेटमेंट, बट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन लाइक दिस, क्योंकि अब हो सकता है कि एंगल पाए ना हो, राइट, इट इज सम डिफरेंट एंगल. सो जनरली हम एंगल कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने नोटिस कर लिया कि भाई इस वेक्टर को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट दिस वेक्टर, राइट. बट जनरली हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो वी कैन फाइंड cos theta is AB. So we have A dot B का definition में we have cos theta का definition, right. Cos theta is generally defined as A dot B divided by magnitude of A and magnitude of B. So this is how we define the angle between two vectors, कि हम cos theta निकालते हैं, because it is much easier than the cross product, right. Dot product is easier. So let's find magnitude of A and magnitude of B. So magnitude of AB कितना है, so this is square root of 1 plus 16 plus 1, this is root 18, which is 3 root 2, and magnitude of CD vector कितना है, this is 4 plus 64 plus 4, which is root of 72. 72 is 6 root 2. Okay, so हमने इनका magnitude निकाल लिया. So cos theta, where theta is the angle between these two vectors, was defined as AB dot CD divided by magnitude of AB and magnitude of CD. So what is the dot product between AB and, so let's write the AB and CD vector. So this is 1 I cap plus 4 J cap minus 1 K cap
and we have to take dot product with minus 2i cap minus 8j cap प्लस 2k cap, एंड नीचे हमने दोनों के मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिए थे, 3√2 इंटू 6√2, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? So we will multiply x component with x component, y with y. So 1 into minus 2 plus 4 into minus 8 plus minus 1 into 2 divided by, so 3 into 6 is 18, 18 into 2 is 36. So minus 2 minus 32 and minus 2 divided by 36. Cos theta is minus 36 by 36, which is minus 1. So cos theta minus 1 कब होता है? When theta is pi. Theta कितना आ रहा है? Pi आ रहा है. So this means एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर कितना है? 180 डिग्री. एंड अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर ऑल्सो, राइट? ठीक है. सो एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी वेक्टर इज पाई, हेंस ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर ऑल्सो, these are also collinear, right? Okay. Let's move to next example. A, B and B and C are three vectors, and उसके बारे में given है कि हमें magnitude of A given है, which is 3, magnitude of B vector is 4, and magnitude of C vector is 5, and each of them being perpendicular to the sum of other two. So it says A vector is perpendicular to sum of the other two. It is B plus C vector से perpendicular है, right? And B vector किससे perpendicular है? Sum of other two. So A plus C से perpendicular है, right? ये. And C vector किससे perpendicular है? A plus B से, right? ठीक है. So if you want to, you can keep them in cyclic order. So maybe you can write it as B plus A, right? ठीक है, B plus C, sorry, C plus A. So C plus A. So A is perpendicular to sum of B plus C, B is perpendicular to sum of C plus A, and C is perpendicular to sum of A plus B. अब परपेंडिकुलर है तो उससे कुछ इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट? परपेंडिकुलर का वेक्टर्स के फॉर्म में क्या इक्वेशन होता है, राइट? यू शुड नो दैट. अगर वो नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. If two vectors are perpendicular, what does that imply? You should be able to write it, right? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. एंड अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, राइट? तो दिस मींस A का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका शैडो ऑन सम B plus C विल बी 0, राइट? ठीक है. सो B का डॉट प्रोडक्ट ऑन C plus A कितना होगा? 0. It's C का डॉट प्रोडक्ट on A plus B will be 0. And हमारा क्वेश्चन है find this value. So पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि, राइट, कि A वेक्टर perpendicular to B वेक्टर implies A dot B is 0. And अगर A वेक्टर
is parallel to B vector, this implies A cross B is 0, right? It's null vector. A cross B is null vector. So it's a vector, but it's a null vector, right? So very, very important. So now second condition is find. तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? Magnitude of A plus B plus C. So magnitude of A plus B plus C. अब ये कैसे निकालेंगे? हमने पहले भी डिस्कस किया था. दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं. सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ A डॉट A, राइट? बिकॉज A डॉट A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर. सो इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा? It will be square root of A plus B plus C vector dotted with A plus B plus C vector. So this is let's multiply all of these, so we'll get mod A square, so A dot A, right? So there will be 9 terms. If you want to, you can write all of them. A dot A plus A dot B plus A dot C plus B dot A plus B dot B plus B dot C plus C dot A plus C dot B plus C dot C. Okay, so we already know A dot A vector कितना होता है? A dot A vector is magnitude of A square. So we have 3 terms here. So this term and this term will become magnitude of A square, magnitude of B square and magnitude of C square. And चाहिए तो अब you can write this term as the first term, or you can add all of these terms to find twice of A twice. So you can do that here also, but let's see. I will do is मैं इन दोनों टर्म से एक टर्म बना रहा हूँ. क्या बना रहा हूँ मैं? A dot B plus C, and ये कितना है? null 0, right? ठीक है. And then I am using these two terms. इसमें से मैं B कॉमन ले लूँ अगर. So B dot A plus C, this is also 0, and then these two are left. C common, A plus B, which is also 0. ठीक है, method 1. Or there is a method 2. You can add all of these to find twice of A dot B, क्योंकि commute करेगा. A dot B plus B dot C plus C dot A is 0. So you can find this also, and you can add all these terms to find that term twice of A dot B plus B dot C plus C dot A, and that term will become 0. So basically what will be left inside the square root is square root of A square, magnitude of A square plus magnitude of B square plus magnitude of C square. So vectors हैं, so let's put the vector sign, and these are 3, 4 and 5, I guess, from the question, right? 3, 4 and 5. So 3 square, 4 square, 5 square, which is square root of 50, which is 5 root 2. Okay, so हमें क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B plus C. So magnitude of A plus B plus C is 5 root 2. So इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर some competitive exams and school exam.
क्योंकि यहाँ पे आपको दो तीन चीजें सोचनी है कि अगर कोई दो चीजें परपेंडिकुलर गिवन है तो क्या लिखना है, देन यू हैव टू राइट देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, राइट, अगर परपेंडिकुलर गिवन है, राइट, पैरेलल गिवन है तो देन क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, राइट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना। So looks like a similar question. Let's see. 29th. Three vectors A, B and C satisfy the condition A plus B plus C is null vector. Mu is defined as this condition. Okay. So if magnitude of A, B and C, ठीक है, हमें mu की वैल्यू निकालनी, ठीक है. So let's see what is given to us. So first thing given to us is the sum of all these vectors is null. Okay. Second thing given to us is magnitude of A कितना है 3, magnitude of B कितना है 4 and magnitude of C is 2. And हमें क्या निकालना है, find mu. So what is mu? Mu is A dot B plus B dot C plus C dot A. And अभी हमने ये क्वेश्चन किया था and we know how to calculate that. So let's start with our first condition and let's say this is the second condition. So from 1, what can I say? If A plus B plus C is null vector, तो magnitude of A plus B plus C कितना होगा? Magnitude of A plus B plus C will be 0. So that means, right, square root of वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ a प्लस बी प्लस सी will be 0. And we can remove the square root by squaring both sides. So a plus b plus c का dot product with itself will be 0. With itself will be 0. And now we will get all the terms that are required. So let's say we will get a dot a plus a dot b plus a dot c. So आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू कैन डायरेक्टली राइट मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड 2 कॉमन है. But in school exam you should write all 9 terms. So and write the formulas on the right side. B dot a plus b dot b plus b dot c plus c dot a plus c dot b plus c dot c. And this is equal to 0. And right side में हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे. वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज मॉड v स्क्वायर, राइट, एंड वी ऑल्सो नो u डॉट v कितना होगा. सो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इट सेम एज v डॉट a u, राइट, ठीक है. सो these are the two formulas I'm going to use. So that will give me mod a square, right, plus mod b square plus mod c square. So vector vector vector, don't forget the vector sign, otherwise you can lose marks. And I can add a dot b and b dot a to find twice of a dot b, right, and I can also add a dot c and c dot a to find twice of c dot a, right. So let me write it with blue only. So twice of c dot a, and you can also add green, so let's say b dot c and c dot b to write twice of b dot c.
and this is all equal to 0. So mod a square, so a was 3, magnitude of a was 3, it was given in the question. B का magnitude 4 था and C का 2 था. So from 2 I can say 3 square plus 4 square plus 2 square plus twice of, this is the term we want to calculate, right? This is the mu, a dot b plus b dot c plus c dot a is 0. So this is 9 plus 16 plus 4 plus twice of mu, this is some number, mu is 0. So 2 mu is 29 and minus 29 and mu की वैल्यू आ रही है minus 29 divided by 2. Let's check the answer from the NCERT. So mu is minus 29 by 2. So last example and very important example for school exam. ये क्वेश्चन अगर स्कूल में आता है तो इट इज डिफिकल्ट एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल. सो काफी छोटा क्वेश्चन है बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई विल मार्क इट इंपॉर्टेंट. स्कूल एग्जाम में आया तो भूल सकते हो तो प्रैक्टिस चॉइस और थ्राइस. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी दिख जाएगा. सो लेट्स सी. सो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो स्कूल एग्जाम में अच्छा भी लगेगा. सो इफ with reference to the right-handed system of mutually perpendicular i cap, j cap and k cap. So ठीक है, अभी तक तो एक्सेस की बात कर रहा है. तो अल्फा वेक्टर डिफाइन किया हुआ है. अल्फा वेक्टर इज 3i cap minus j cap. ओके, सो प्लस 0 k cap, राइट. ठीक है. बीटा वेक्टर डिफाइन किया है 2i cap प्लस j cap माइनस 3k cap. एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म, हमें बीटा को किस फॉर्म में लिखना है? बीटा 1 वेक्टर. तो ठीक है, बीटा वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 where beta 1 is parallel to alpha vector and beta 2 is perpendicular to alpha vector. So this is parallel to alpha vector and this is perpendicular to alpha vector. So if I try to draw a simple diagram, maybe, so let's say this is some alpha vector and I also have some, let's say this is beta vector and I want to define beta vector as beta 1 and beta 2. Beta 1 क्या है? Beta 1 is a vector which is parallel to alpha vector. Let's say this is beta 1, right? ठीक है. And beta 2 क्या है? Which is perpendicular to alpha vector, beta 2. And you can see from the triangle law here कि इस ट्राइंगल में you can see बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना? बीटा है, राइट. ठीक है, बीटा वेक्टर के इक्वल है, राइट. ठीक है. सो you can see beta 1 and beta 2 gives you the third side. You are going from initial to final point. This is the beta vector and I want to write the two components of beta vector in such a way. So इस क्वेश्चन को कैसे करें? So it's very simple. So perpendicular वाला पहले नहीं करेंगे, पहले parallel वाला करेंगे. Parallel is collinear and collinearity की condition बहुत simple होती है, right? So if a vector is parallel to b vector, it implies a vector and b vector are collinear, right? So a vector is equal to lambda times b vector, right? So this is the condition for collinearity. So this is what we will use to find beta 1 vector. So beta 1 vector को मैं क्या define कर सकता हूँ? Beta 1 vector is let's say lambda times alpha vector, right? ठीक है. Since
beta 1 vector is parallel, so spelling mistake हो गया, it is parallel to alpha vector, right? Since beta 1 vector is parallel to alpha vector, so beta 1 can be defined as lambda times alpha vector. So beta 1 vector मैं define कर रहा हूँ as lambda times alpha कितना है 3i minus j. So I define my beta 1 vector as 3 lambda I cap minus lambda j cap. Now, so I will mark this as my, let's say, equation 2. Let's say 1 क्या है? Let's say 1 is beta किसके equal है? Beta 1 plus beta 2. So this is 1. So from 1 and 2 I can now find beta 2 vector. So beta 2 vector किसके equal है? Well, beta 2 vector is nothing but beta vector minus beta 1, right? From that equation. So from 1 मेरे को पता है बीटा वेक्टर कितना था, बीटा 1 प्लस बीटा 2, एंड आई कैन फाइंड नाउ बीटा 2 वेक्टर. सो बीटा 2 वेक्टर कितना आएगा? सो बीटा वेक्टर कितना है? 2i प्लस j माइनस 3k, एंड इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप. So beta 2 vector can now be defined as 2 minus 3 lambda I cap plus 1 plus lambda j cap and minus 3k cap. Now अब क्वेश्चन है कि लैम्डा कैसे निकाले, राइट? हमें बीटा और बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्म तो पता चल गया. अगर लैम्डा पता चल गया, इफ वी नो लैम्डा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो लैम्डा के लिए कंडीशन कैसे लिखेंगे? तो वील लुक इनटू अवर डायग्राम. तो बीटा 2 वेक्टर और बीटा 1 परपेंडिकुलर है, बट बीटा 1 की जगह वी कैन यूज अल्फा आल्सो, राइट? अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2, राइट? ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2 एंड अल्फा वी ऑलरेडी नो. So alpha vector is perpendicular to beta 2 vector. तो इससे हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं? 2 vectors are perpendicular, their dot product must be 0, alpha dot beta 2 must be 0, and this will give you the value of lambda. and अगर lambda पता चल गया तो beta 1 और beta 2 पता लग जाएंगे. तो alpha vector कितना था? So from the book we can see alpha vector is 3i minus j. So 3i minus j का dot product with beta 2, which is 2 minus 3 lambda times I cap plus 1 plus lambda times j cap minus 3k cap. So if you want, you can add a term there so that we do not make a mistake, plus 0 times k, right? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस 0 टाइम्स के कैप भी है, राइट? ठीक है, एंड वी विल मल्टीप्लाई x का कंपोनेंट विद x, y का विद y एंड z का विद z. सो वी गेट 3 टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा प्लस 0 टाइम्स माइनस 3 is equal to 0, right? So their dot product is 0. So 6 minus 9 lambda minus 1 minus lambda is equal to 0. We get 5 is equal to 10 lambda. Lambda is half. So we get lambda is 1 by 2. And let's find beta 1 vector now. Beta 1 vector, which was 3 lambda I cap minus lambda j cap, 3 lambda I cap minus lambda j cap, ये कितना होगा? 3 by 2 I cap minus half j cap. Beta 2 vector, which was 2 minus 3 lambda I cap plus 1 plus lambda j cap and minus में 3k cap.
सो लैम्डा की जगह हाफ डालेंगे एंड बीटा 2 वेक्टर कितना आएगा 2 माइनस 3/2 विच इज हाफ, सो हाफ आई कैप एंड 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 जे कैप and minus 3 k cap. And you can always check, you can always add beta 1 and beta 2 and check कि beta vector आ रहा है कि नहीं, right? If you add these two, you'll get 2 I cap plus 1 j cap minus 3 k cap, which is exactly as the beta vector. तो हमने beta vector को decompose कर दिया beta 1 and beta 2 में, and हमने कैसे किया, पहले parallel वाला यूज किया and we use the condition for collinearity. A vector is equal to lambda times b vector. तो हमने बस lambda से multiply किया अल्फा वेक्टर को, तो हमने अल्फा वेक्टर को यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट बीटा 1. बीटा 1 पता चल गया तो उनके सम से मुझे बीटा 2 पता चल गया. बीटा 2 वाज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, राइट? डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, वी फाउंड लैम्डा. लैम्डा पता चल गया तो दोनों वेक्टर पता चल गए बिकॉज फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2, राइट? सो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से. सो दैट कंप्लीट्स ऑल द एग्जांपल्स of miscellaneous. So miscellaneous exercise we will do in the next upcoming lecture. So thank you for watching. Do these questions properly and best of luck, and notes will be available below the video.